I think थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम आया था, but I hope so now the sound problem is clear. मुझे बताओगे बच्चों, I hope you are able to hear me. I hope now you are able to hear me. चलो ठीक है. Now, so yesterday we have taken the regard of some basic terms or some basic expressions dealing with administration and management. If you remember these terms like organization, administration, public administration and management. So I hope you understand the basic difference between all these terms, all these connotations. Let me tell you one more time, when I take the regard of administrative activities means, it means of course every activity which is performed by every personnel, by every worker, by every employee which is working in an organization. It could be managerial activities, professional technical activities, it could be manual activities or whatever the case may be. And administration is always explained as, defined as a common purpose to achieve a common goal. A common purpose of an institution, a common purpose of an organization, or a common purpose basically of a setting. Now the setting could be a private setting or a public setting. तो एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि वो सारी एक्टिविटीज, वो सारी फिनोमेनास, वो सारी प्रोसेसेस जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में होती हैं, और इन प्रोसेसेस के थ्रू हमें क्या 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 गोल अचीव करना है. हमारा गोल क्या होता है? एक प्री डिटरमाइंड पर्पस है. Now the purpose of a particular physical setting could differ. I mean, when I take the regard of a private institution or a private administration and a public administration, their objective, their goal, their purpose could differ. The main purpose of public administration would be welfare, to provide basic services to the people, to take initiative for social inclusion, financial inclusion, community inclusion, and so on and so forth. But when I take the regard of the main purpose, the main goal of private institution, the main purpose of private institution could be to bring more production, productivity, efficiency in economy in the whole organizational setup. So my concept and my contention over here is that the purpose could differ in different physical settings. The the purpose could differ in different type of administration and organizations. Agree? And administration is nothing but the activity, actually a combined and coordinated activity of every worker to achieve a predetermined goal. The activity includes every activity from the top level to the bottom level in an organization. Then I taught you about public administration. Public administration literally means, of course, governmental administration. I mean, that particular type of administration which is working in a political setup, in a political setting. And public administration always execute law, implement policies. Agree? Yesterday we have taken the regard of public administration. Then we have discussed about organization and management. I told you that when I talk about managerial activities, अगर हम managerial activities की बात करते हैं, तो एक मैनेजर क्या करता है? मैनेजर गाइड करता है, मैनेजर डायरेक्ट करता है, मैनेजर कमांड करता है, कभी कभी मैनेजर प्लान भी करता है, मैनेजर सुपरवाइज करता है, मैनेजर सुपरिटेंड करता है अपने एम्प्लॉइज को. So all those activities which are related to the giving direction, to provide a type of guidance, to command, to supervise some people or employees are called as what? The managerial activities. Agree? So I hope you are in a position to understand all these important terms. And then yesterday I told you that today we have to start our very first topic. That topic is called as evolution of public administration as a discipline. Now let me tell you one more time, the evolution of public administration as a process or as an activity had taken place way back from prehistoric era. So as an activity could be managerial, administrative, professional, technical, and so on and so forth. So as an activity, as an process, the existence of public administration has taken place from the existence of civilization. जब से हमारा civilization establish हुआ, बना, उसने काम करना शुरू किया, जब से society बनी, जब से community बनी, जब से authority आई, राजा के पास, वजीरों के पास, जब से पावर्स आए दूसरे लोगों के पास एक्सेट्रा, तब से एडमिनिस्ट्रेशन एग्जिस्ट कर रहा है. लेकिन वी आर नॉट स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ सेपरेटेड डिसिप्लिन.
the evolution of public administration as a subject, as a discipline, like psychology, sociology, anthropology, history, physics, whatever the case may be, had taken place after 1887. And yesterday I told you that in 1887, of course, one book was published by Mr. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson was nothing but the former president of USA, and the name of the book was The Study of Administration. In his book, he demanded to study public administration as a separate subject, as a separate consideration and discipline. तो मेरे कहने का मतलब ये है कि हमें जो पहला टॉपिक हमारा पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का इवोल्यूशन एक सब्जेक्ट के फॉर्म में कैसा हुआ। इसका मतलब ये भी होता है कि अगर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाया जाता है, देन व्हाट कुड बी द पॉसिबल सब्जेक्ट मैटर, theories, principles, what we can teach, or with regard to which of course a training could be delivered in the domain of public administration। मतलब हम public administration में आखिर पढ़ाएं क्या, और क्या public administration को पढ़ाने से कुछ फायदा होगा, फायदा किस में होगा, फायदा सिविल सर्विसेज में होगा, ब्यूरोक्रेसी में होगा, प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में होगा, क्या उनमें ज्यादा एफिशिएंसी, इकोनॉमी आ सकती है, क्या वो ज्यादा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को ला सकते हैं, क्या वो बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सेपरेट सब्जेक्ट के फॉर्म में पढ़ाना जाना जरूरी है। सो आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू एस्टैब्लिश ओवर हियर। Agree? And we have to discuss, of course, our very first topic called as the evolution of public administration as a discipline. But before coming to the evolution, be very sure, I want to clarify one simple concept. I mean, one simple, you can say basically, topic of your syllabus, from where the question could be asked in 3 marker or in 5 marker. तो मुझे ये लगता है ये क्वेश्चन 3 मार्कर 5 मार्कर में आ सकता है। जरा देख लेते हैं वो टॉपिक कौन सा है। दैट इज द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Nature of public administration. Now, when I talk about the nature of public administration, be very sure, in the nature of public administration, we are taking 2 views of public administration. One is called as integral view. Integral view, or we can say the integrated view. And then we are having one more, of course, area by which the nature of public administration could be determined, called as managerial view. Managerial view. So there are 2 specific views. One is the integral, other one, which one? The managerial view. अब देख लेते हैं ये integral view और managerial view होता क्या है. Now, in integral view, when we are studying public administration, we are including every activity of public administration. Now, talking about every activity means, of course, the managerial activity, the technical activity, the manual activity, ठीक है, द प्रोफेशनल एक्टिविटी एंड सो एंड सो फोर्थ। तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जितनी भी एक्टिविटीज होते हैं वहां पर कुछ टेक्नीशियंस होते हैं, कुछ एकेडमिशियंस होते हैं, कुछ मैनेजर होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं। एम्प्लॉइज मैनुअल वर्क करते हैं, दिन के कार्य करते हैं। सो ऑल दोस एक्टिविटीज विच आर कमिंग अंडर द परव्यू और एम्बिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वी आर इंक्लूडिंग द कंसर्न एक्टिविटीज व्हेन वी आर स्टडिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बाय टेकिंग द रिगार्ड ऑफ ए व्यू। दैट व्यू इज कॉल्ड एज व्हाट? इंटीग्रल व्यू और इंटीग्रेटेड व्यू। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है समावेशीकरण करना या फिर इंटीग्रेट करना हर एक एक्टिविटीज को एडमिनिस्ट्रेशन की। बट व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ वन मोर व्यू ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अबाउट द नेचर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉल्ड एज व्हाट? द मैनेजरियल व्यू। नाउ मैनेजरियल व्यू, एज आई ऑफन टोल्ड यू, इट मीन्स ऑफ कोर्स here we are including only those activities which are coming under the purview of superiors or managers. I mean activities like providing a type of guidance and direction to the employees, commanding, controlling the employees, supervising, superintending the employees. तो वो सारी एक्टिविटीज जो कि एक मैनेजर परफॉर्म करता है, ठीक है, उसे हम लोग इन्वॉल्व करते हैं या शामिल करते हैं मैनेजरियल व्यू में। So when we study public administration, be very sure we study public administration in an integrated manner or in a managerial manner. And these 2 views are actually determining the nature of public administration. So the nature of public administration could be integrated and could be managerial. Now, when we study public administration in India, भारत में public administration पढ़ाया जा रहा है। पहले तो डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था मैं आगे बताऊंगा आपको, 1930s के बाद फिर पूरे डिग्री कोर्स स्टार्ट हो गए कई यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में। तो भारत में जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं इन इंडिया, वी आर ऑलवेज टेकिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ इंटीग्रेटेड व्यूज।
I mean, within an administration, we are including every activity. चलो, अगर किसी डिस्ट्रिक्ट में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं, जो मैंने कल भी आपको बताया था, तो आपको ये पता है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में कई इनकम्बेंट्स होते हैं. इनकम्बेंट्स मीन्स पर्सन होल्डिंग द ऑफिस. कई अथॉरिटी होती हैं, कई पर्सोनेल्स होते हैं. जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के नीचे एसडीएम के नीचे तहसीलदार के नीचे नायब तहसीलदार, सर्कल ऑफिसर, पटवारी, विलेज लेवल वर्कर्स. So number of employees are working at the district level in a department called as General Administration Department, सामान्य प्रशासन विभाग बोला जाता है. Now there could be so many persons or so many persons of authority which are performing managerial function. They are commanding, directing, supervising, controlling the activities of other one. There could be so many persons which are of course somewhat technical in their own respect. There could be so many persons which are performing manual work. Manual work means clerical type of work. तो एडमिनिस्ट्रेशन में कई तरह के लोग होते हैं, कई तरह की एक्टिविटीज होते हैं. इन सारी एक्टिविटीज को मिला के यदि पढ़ा जाए तो उसे पढ़ा जाएगा एक व्यू के अंदर, एक कंसेप्ट के अंदर. उस व्यू को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रल व्यू और इंटीग्रेटेड व्यू. बट व्हेन वी आर स्टडिंग ओनली द मैनेजरियल एक्टिविटीज, दैट व्यू इज कॉल्ड एज ऑफ कोर्स व्हाट, द मैनेजरियल व्यू. In India, as I often told you, but in most of the countries, not only in India, when we study public administration, always we study it by taking that view called as what? The integral view, involving every activity, from the bottom floor up to the upper level, from the superior post up to the subordinate one, every activity. I agree? So by taking this perspective about the nature of public administration, I am starting my very first topic of this section called as evolution of public administration as a discipline. You can write a title now. हमारा पहला टॉपिक आपके सिलेबस में मेंशन है. मैं आपको फिर बता दूं, इसके बारे में क्वेश्चन 200 वर्ड्स में आ सकता है. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड सम डिक्टेशन टू यू विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक. डिक्टेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि आपका हैंड माइंड कोऑर्डिनेशन तब जाके बेटर होगा. जो मैं बोल रहा हूं, बोलने के बाद जो आप लिख रहे हैं, लिखने के बाद मैं अपनी लैंग्वेज में बोल रहा हूं, मैं अपनी जो लैंग्वेज में आपको लिखवाऊंगा उसको आपको चेंज कर सकते हो अपनी लैंग्वेज में, अपने विजडम के अकॉर्डिंगली, अपने थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंगली. वो आप बिल्कुल कर सकते हैं. तो डिक्टेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग. डिक्टेशन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एसिमिलेशन ऑफ कंसेप्ट. जब तक आप लिख नहीं रहे हो तो आप आधा समझ रहे हो, क्योंकि मैं जो बोलूंगा थोड़ी देर के बाद आप भूल जाओगे. और जब हम लिखते हैं तो ऑफ कोर्स हम पूरे के पूरे मैटर को, सेंटेंसेस को, फ्रेजेस को, पैराग्राफ्स को आप कह सकते हो ड्राफ्ट करते हैं. That aesthetic, or you can say drafting type of capacity of a person or an aspirant would make the aspirant much more competent for the examination. So I will provide some dictation to you. Let's start our very first topic called as the evolution of public administration as a discipline. चलिए शुरू करते हैं. See, तो चलिए देखते हैं जरा हाउ द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस. मैंने कल आपको बताया था, अगर आपको याद हो, कि द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस इन 5 stages and still that particular stage is pursuing. But before 1887, so many contributions had been done by so many scholars, so many political thinkers in our political system and administrative system. जैसे yesterday I told you that one book was written by Kautilya, by Chanakya, called as Arthashastra. Again, one more book was written by Aristotle called as Politics, Machiavelli, the Prince. And these books are dealing with the functioning of government, the functioning of administration at that time, ancient time, medieval time. Agree? So all these books are dealing with, or they have written about the functioning of government and organization or a setting. मतलब एक राजा के क्या काम हो सकते हैं, एक वजीर के क्या काम हो सकते हैं, एक पुरोहित, एक सेनापति के क्या काम हो सकते हैं, राजा की क्या क्या ड्यूटी होनी चाहिए, राजा के क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होनी चाहिए. एवरीथिंग हैड बीन रिटन in these books. It's not a matter for consideration for us because it is not the part of your syllabus. अगर हम core public administration पढ़ रहे होते, then of course I will take the regard of the basic concepts of Arthashastra, the Prince, and number of books. I agree.
But prudently, the evolution of public administration as a discipline, as a subject, had taken place after 1887. And then after 1887, or we can say from 1887, the study of public administration, or we can say the evolution of public administration as a subject, had taken place in 5 stages. Let me tell you one more time what these stages are all about. The very first stage is called as politics administration dichotomy. Dichotomy means a division. What this politics administration dichotomy is all about, I will discuss. The second stage is called as principles of administration. How the principles have evolved, we have to discuss. Then era of challenge. Fourth one is crisis of identity of public administration. Public administration in the fourth stage, from 1948 to 1970, has lost its identity. Identity as a subject, identity as a subject matter, identity as a separate discipline. Why the public administration has lost its identity? मतलब ये समझ में नहीं आया स्कॉलर्स को कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से पढ़ाया जाना चाहिए या नहीं पढ़ाया जाना चाहिए. क्या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि उसका एक सेपरेट क्यूरिकुलम हो, सब्जेक्ट मैटर हो, डायमेंशंस हो, स्कोप हो, स्केल हो? अगर नहीं है तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम लोग अलग से क्यों पढ़ाएं? उसको पॉलिटिकल साइंस में ही इंक्लूड कर दें या उसको मैनेजमेंट में ही इंक्लूड कर दें. Now listen, public administration is a connecting link between two disciplines, two streams. One is political science, other one management. So when we are studying public administration or simply administration, we have to be very sure, the theories, the connotations of political science also, and the practices of management also. Then only we can study public administration. And the last stage, the fifth stage, is called as the public policy perspective stage. That stage starts in 1970 and it is sustaining or continuing till date. I am starting my discussion with the very first stage of the evolution of public administration, called as what? The politics dichotomy, politics administration dichotomy. That stage starts of course in 1887 and lasts up to 1926. ठीक है, तो देख लेते हैं what this stage is all about. आइए. अब सुनो जरा, पहले मैं आपको समझा दूं फिर मैं बताता हूं कि हमें लिखना क्या क्या है स्टेज में. देखो, पहले तो आप ये समझिए कि इस टॉपिक से 3 तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं. दे कैन आस्क अ क्वेश्चन दैट हाउ द एवोल्यूशन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज टेकन प्लेस इन डिफरेंट स्टेजेस. सो यू टू डिमार्केट दो स्टेजेस. ठीक है, दे कैन आस्क अ क्वेश्चन इन दिस मैनर दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्टिविटी और प्रोसेस इज इवॉल्विंग इन अवर पॉलिटिकल सिस्टम. But the evolution of public administration as a discipline had taken place recently. Illustrate, define. ठीक है, वो ये भी पूछ सकते हैं. और या तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं, highlight the basic features of all the important stage of public administration evolution or public administration development. So in this manner, these 3 or 4 manner, the question could be asked. ठीक है, मैं 3-4 तरीके से आपको क्वेश्चन यहां पर पढ़ाने की कोशिश करूंगा. ठीक है, और मुझे लगता है ये क्वेश्चन 200 वर्ड्स में आ सकता है. तो चलिए देखते हैं द वेरी फर्स्ट स्टेज. द टाइटल ऑफ दिस स्टेज इज पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटोमी. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिटिक्स? पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिकल सेटअप. Now when we take the regard of our country, I hope you know very well, we are having a political setup. We are casting our vote to the members of Lok Sabha and Rajya Sabha. And when we are giving our vote from the members of Lok Sabha and Rajya Sabha, some incumbents are appointed as ministers. So the whole ministry, which is called as Government of India, headed by the Prime Minister, is nothing but a political setup. जितने भी मंत्री हैं वो political setup का part है. जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो भी पॉलिटिकल सेटअप का पार्ट है. नाउ व्हाट द पॉलिटिकल सेटअप इज डूइंग? पॉलिटिकल सेटअप इज पासिंग अ लॉ, formulating a legislation, framing a policy. And all these laws which are formulated by, created by, enacted by, passed by the political setup. Political setup means, of course, the ministry, I mean government of India, and also, of course, the parliament. So all the laws or legislations or policies which are framed by, which are formulated by, which are created by the political setup are going to be implemented by the administration. So I hope you know very well, administration means bureaucracy in simple language we can say, or civil services. आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हो, अगर आप सेलेक्ट हो जाते हो, रिक्रूट हो जाते हो, then you will become the part of public administration.
and your main work is to implement the policy in a systematic manner and in a synchronized manner. Policy is nothing but the statement of intent. मतलब पॉलिसी में जैसे आपने कई पॉलिसी सुनी होंगी ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पॉलिसी, वुमेन एम्पावरमेंट पॉलिसी, एजुकेशन पॉलिसी, इनोवेशन पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल पॉलिसी। तो ये पॉलिसी क्या होती है? पॉलिसी इज नथिंग बट ए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट। मतलब पॉलिसी में गवर्नमेंट ये बताती है कि आने वाले समय में, आने वाले वर्षों में हमें क्या करना है। व्हाट इज अवर ब्लूप्रिंट, व्हाट आर आवर टारगेट्स, व्हाट कुड बी अवर प्री डिटरमाइंड गोल, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स वी हैव टू अटेन इन द कमिंग फ्यूचर, or we can say what is our statement, statement for development, statement for inclusion, statement for our intention। हम क्या करना चाहते हैं? क्या हम विमेन एम्पावरमेंट के लिए पॉलिसी बना रहे हैं, एजुकेशन के लिए पॉलिसी बना रहे हैं ताकि सबको साक्षरता या लिटरेसी मिल जाए, या हम पॉलिसी बना रहे हैं ठीक है टू प्रोवाइड एवरी टाइप ऑफ हेल्थ सर्विसेज टू द पीपल। सो पॉलिसी इज नथिंग बट ए ब्लूप्रिंट, ड्राफ्ट, खाका, a perspective plan for the coming future, a policy, a statement of intent. That's called as policy. And policies are always framed by politicians, we can say, or political setup. As I often told you, in our country, the political setup is, of course, what? The government, I mean, government of India and state government, and the parliament and state legislature. It is called as a political setup. They are framing policies, formulating law, but these policies and laws and legislations are implemented by administration. तो देखो पहले ये होता था 1887 से पहले, सिंपल लैंग्वेज में समझिए कि व्हेन वी आर कंसिडरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, व्हेन वी आर डीलिंग विद एडमिनिस्ट्रेशन और द एक्टिविटीज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलवेज वी कंसिडर एडमिनिस्ट्रेशन एज अ पार्ट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम. We never consider or study or demarcate administration as an individual identity, as an individual sanctity, as an individual establishment. No. हम ये मानते थे कि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिटिक्स का ही पार्ट, ठीक है, और पॉलिटिक्स से इसको अलग करके देखने की जरूरत नहीं है. मतलब जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर काम करते हैं, वो पॉलिटिक्स का ही पार्ट है, वो पॉलिटिकल सिस्टम का ही पार्ट है. उनकी एक्टिविटीज पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, उनकी एक्टिविटीज को पर रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, उन्हें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दीज एक्टिविटीज आर नॉट एज इंपॉर्टेंट टू गेट द ड्यू डेजिग्नेशन ऑफ ए सेपरेट डिसिप्लिन. नो. But in 1887, Woodrow Wilson has given this concept that we have to separate politics from administration, because administrative activities are as important as political activities. Now, what the administrators are doing, bureaucracy is doing, civil services are doing, they are implementing law and of course executing policies. अगर एक हेल्थ पॉलिसी बना दी, एजुकेशन पॉलिसी बना दी कि भाई हमें 2030 तक सबको बेसिक हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करना है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो इस पॉलिसी को, हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करने की पॉलिसी को इंप्लीमेंट कौन करेगा? एडमिनिस्ट्रेशन करेगा. नाउ द एडमिनिस्ट्रेशन इज फेसिंग सो मेनी लैक्यूनास, बॉटलनेक्स, लूप होल्स. एडमिनिस्ट्रेशन डू हैव सम लूप होल्स आल्सो. Administrative structure is of course facing some discrepancies like corruption, mismanagement of resources, use of illegal funds and so on and so forth. तो एडमिनिस्ट्रेशन की अपनी दिक्कतें हो सकती हैं. एडमिनिस्ट्रेशन जब पॉलिसी को इंप्लीमेंट करता है, किसी लॉ को इंप्लीमेंट करता है, तो उसे कुछ ग्रास रूट लेवल डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है. और हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी अपने अपने लेवल पर बड़ी इंपॉर्टेंट है. Administrative activities like managerial, technical, professional, clerical, every activity is important. And every activity, of course, requires some research कि इन activities को हम ठीक कैसे कर सकते हैं. How we can bring much more efficiency in economy and administration. How we can make our administrators much more efficient. Whether we have to provide separate training to them, or whether we have to recruit that or appoint that administrator, of course, by a very, very personified recruitment system. तो मेरे कहने का मतलब यहां पर यह है कि हमें एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज पर उतनी ही तवज्जो देनी पड़ेगी, उतना ही फोकस करना पड़ेगा जितना फोकस हम लोग पॉलिटिक्स पर पढ़ते हैं. हम लोग इस पर करते हैं कि पॉलिसी कैसे बनाई जानी चाहिए, लॉ कैसे बनाया जाना चाहिए, बिल कैसे रखे जाने चाहिए, बिल में क्या क्या प्रोविजन होना चाहिए. ये पॉलिटिकल सिस्टम का पार्ट हो गया. पॉलिसी का एनालिसिस कैसे होना चाहिए, पॉलिसी के प्रेरोगेटिव्स कैसे होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या क्या होना चाहिए. पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज आर एज इंपॉर्टेंट. I hope you got my point. And Mr. Woodrow Wilson in 1887 has given this contention that when we have to
when we have to take the regard of administration, it is required for us to study administration and the difficulties of administration and the activities of administration in a separate subject. I mean, in a separate discipline. And during this stage, every writing, every publication done by so many scholars, I want to take the regard of some scholars. Like there was one scholar called as L.D. White. L.D. White has written, of course, a book called as Introduction to the Study of Public Administration in 1926, in which L.D. White has demanded for academic legitimacy for public administration subject. Public administration को अलग से आप पढ़ाओ, इसकी पेचीदगियां, समस्याएं, बॉटलनेक्स, लूप होल्स, डिफिकल्टीज सबको डिमार्केट करो, उनको ठीक करने के लिए कुछ थ्योरीज, कुछ प्रिंसिपल्स दो, कुछ व्यू पॉइंट, कुछ ऑब्जर्वेशन दो, और तब जाके हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन को एफिशिएंट कर सकते हैं, उसे ज्यादा प्रोडक्टिव बना सकते हैं. बिकॉज इफ वी आर स्टडिंग administration with politics, we are not in a position to make competent public servants. We can make competent, skillful, personified, adequate public servant and civil services only when we study public administration as a separate subject. So the advocacy of public administration to study public administration as a separate subject was done by Wilson. But L.D. White has written so many you can say basically research paper that we have to study administration as a separate subject. And from 1887, listen, up to 1926, all the publications, all the research papers, all the observations given by several scholars have given this viewpoint that we have to study administrative activities as a separate subject. So in this way, the initial evolution of public administration has taken place, in which public administration get academic legitimacy. अब इसे कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा सकता है. इस पूरी स्टेज में केवल ये काम हुआ. Agree? And the very first stage is called as what? The politics administration dichotomy, division. I hope it's clear. The very first stage. ठीक है. तो जैसे मैंने कहा कि I will also provide some dictation to you, because without dictation you are not in a position to frame your answer, to do hand-mind coordination. So I'm going to dictate some points. Initially I'm going to dictate an introduction, and after introduction all the stages. So start writing. Title is Evolution of Public Administration as a Discipline. Evolution of public administration as a discipline. Agree? Continue. Public administration is always regarded as an activity, of administering, the affairs of government, administering the affairs of government, like enforcement of laws, law या laws, law मतलब legislation, कानून, enforcement of laws, implementation of policies, enforcement of laws, implementation of policies, etc. Implementation of policies, etc. Continue. As a governmental activity, it is as old as a political society,
as a political society, comma, existing within the political system. As a political society existing within the political system. Within the political system, but the systematic study of public administration, but the systematic study of public administration, public administration as a discipline or subject matter of concern, as a discipline or subject matter of concern had taken place after 1887, with the publication of a book called as The Study of Administration. Book called as The Study of Administration. Administration. Change the paragraph. Administration. Change the paragraph. Before 1887, administrative thoughts and practices like Kautilya Arthashastra. Today I will share all these slides also in the description section, so you can see the slides also. Continue. Kautilya Arthashastra. Aristotle Politics, a book written by Aristotle called as Politics. Aristotle Politics. Machiavelli, Machiavelli, M-A-C-H-I-A, M-A-C-H-I-A-V-E-L-L-I, M-A-C-H-I-A-V-E-L-L-I, Machiavelli, Machiavelli, the Prince, Machiavelli's The Prince, उनकी बुक का नाम था The Prince, Machiavelli's The Prince, comma, 18th century cameralism, 18th century cameralism, 18th century cameralism. Cameralism means German series of administration. Germany has given some thoughts about administration called as cameralism. C-A-M-E-R-A, C-A-M-E-R-A-L-I-S-M, 18th century cameralism in Germany and Austria, in Germany and Austria, in Germany and Austria, Austria, etc. In Germany and Austria, etc., has given their thought about, administrative practices, practices and governmental functioning. Administrative practices and governmental functioning. However, the actual evolution of public administration, public administration has taken place with 19th century industrialization,
There are so many factors which have evolved public administration. Yesterday I told you, have taken place with 19th century industrialization, comma, theory of scientific management I will discuss in the coming time. Theory of scientific management, emergence of a welfare state, etc. Emergence of a welfare state, etc. Emergence of a welfare state, etc. तो मेरे ख्याल से आप समझे होंगे, so many writings had been done, of course, before 1887 about organizational, administrative functioning and governmental setting. But the actual evolution of public administration after 1887 had taken place because of some factors. Factors like industrialization that had taken place in Europe and America. One theory has been proposed by a scholar called Taylor, I will discuss in the coming time, Frederick Taylor, named scientific management theory. And a new concept of state, a new concept of government has evolved in our political setting called as what? The welfare state. मतलब स्टेट का, गवर्नमेंट का काम क्या है? लोगों को बेसिक सर्विसेज, वेलफेयर प्रोवाइड करना. The main function of government is to work on the public interest of the people. It is required for the government to control every activity of the people. Every activity in the sense, provide every services to the people. Like a welfare, kalyankari state. So these are the factors which are responsible for the development or evolution of public administration as a subject. Agree? And now I am coming to the stages of evolution or stages of development. Agree? So just write a title, the very first stage of development. The very first stage. Title is Politics Administration Dichotomy. Politics Administration Dichotomy. Politics Administration Dichotomy. Agree? Dichotomy. I hope you are seeing in the board. Dichotomy. And this stage starts in 1887 and lasts up to 1926. From 1887 to 1926. 1926. Now just write, मैंने सब डिस्कस कर दिया आपके से, थोड़ा सा टेक्स्ट लिखिएगा फिर आगे बढ़ेंगे. इसमें हुआ क्या? ठीक है. कंटिन्यू. कंटिन्यू. During this stage, the contention was raised. The contention was raised to separate. The contention was raised to separate administration from politics. To separate administration from politics. Administration from politics. Continue. Woodrow Wilson in his book The Study of Administration. Woodrow Wilson in his book The Study of Administration. The Study of Administration has propounded. In the study of administration has propounded. Propounded means proposed. Has propounded. प्रस्ताव किया. Proposed. Has propounded that the study of public administration. That the study of public administration. The study of public administration should be done in a separate, independent. Should be done in a separate, independent. Should be done in a separate, independent. Separate, independent and systematic manner. Should be done in a separate, independent and systematic manner, comma. Systematic manner, comma. Outside the subject matter of. Outside the subject matter of. Outside the subject matter of. Matter of political system. Outside the subject matter of political system. Subject matter of political system. Political system. Continue. He advocated that. He advocated that politics
is concerned with policy making. Politics is concerned with policy making. Politics is concerned with policy making, and policy is also the statement of, and policy is also the statement of, and policy is also the statement of intent, and policy is also the statement of intent, while administration while administration is a field of business, administration is a field of business, business मतलब काम करने वाला, is a field of business that execute policies, business that execute policies and involve activities like management, technical activities, clerical activities, manual activities, technical activities, clerical activities, manual activities, etc. Last sentence, it should be noted that with the publication of a book, called Introduction to the Study of Public Administration, in bracket 1926, Introduction to the Study of Public Administration, in bracket 1926, written by L.D. White, W-H-I-T, L.D. White, written by एक स्कॉलर थे, academician थे, L.D. White, written by L.D. White. Public administration acquires, L.D. White, public administration acquires academic legitimacy. Public administration acquires academic legitimacy. तो ये हमारी पहली स्टेज है. द स्टेज इज नोन एज द पॉलिटिक्स डाइकोटॉमी डिवीजन स्टेज और पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटॉमी स्टेज. So I hope so you understand the very concept of the very first stage, and now we are coming to the second stage. अच्छा, मैं थोड़ा सा आपको ज़्यादा लिखवा दे रहा हूँ. इसका मतलब ये है कि जब आप एग्जामिनेशन में जाएंगे अपने आप आपको थोड़ी चीज़ याद रहेगी, थोड़ी चीज़ आप भूल जाओगे, लेकिन इतना मैटर आपके पास रहेगा कि दैट इजली यू आर इन अ पोजिशन टू राइट ऑफ कोर्स एन आंसर ऑफ 200 वर्ड्स और 225 वर्ड्स. सो आई एम डिक्टेटिंग ऑफ कोर्स समवॉट मोर टू यू just so that you have enough matter, and then it is not required for you to take the regard of any other book, any other material, or whatever the case may be. आपने यहाँ से पढ़ लिया, इतना काफ़ी है. इससे जो क्वेश्चन आने होंगे वो आ जाएंगे. ठीक है? So that's our very first stage, and now I am coming to the second stage. The second stage is known as the principles of administration stage. The principles of administration stage, and the time period, I mean the era of that particular stage was from 1927 to 1937. ठीक है? तो अब देखते हैं ये what this particular principle is all about. देखो, पहले तो ये समझिए कि ये प्रिंसिपल्स आखिर होते क्या है. अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने मान लिया कि वी हैव टू स्टडी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए सेपरेट सब्जेक्ट, पर इसमें पढ़ाया क्या जाए. मतलब हाउ इन व्हिच पर्टिकुलर मैनर वी हैव टू डेवलप सम थ्योरी, सम प्रिंसिपल्स, सम एक्सप्रेशन, सम कोनोटेशन दैट वी कैन टीच इन द डोमेन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. हम लोग पढ़ाएंगे. So many scholars, I will discuss their name also, like Henry Fayol, Mary Parker Foley, Luther Gulick, Urwick, I will discuss.
दे प्रपोज ऑफ कोर्स सम प्रिंसिपल्स, ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, एंड द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई वांट टू स्पेसिफाई हियर इज कॉल्ड एज हायरार्की। हायरार्की, नाउ हायरार्की मींस ग्रेडेशन ऑफ ऑफिसर्स, एक के ऊपर एक। जैसे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन आप बना रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को हायरार्कियल फॉर्म में सेटअप करना पड़ेगा। If you are creating any organization, any department, any office, any institution, any setting, it is required for you, of course, to adopt the same principle of hierarchy. Now, the same principle of hierarchy मतलब क्या? It means, be very sure, ठीक है, there should be a person called as superior. To assist some superior, there should be a person called as what? Subordinate. To assist some subordinate, there could be, of course, some person called as what? Subordinate to subordinate, assistant subordinate. जैसे when I talk about the hierarchy at our district level, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आप देखते हैं सबसे ऊपर होता है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। टू सपोर्ट असिस्ट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वी आर हैविंग एसडीएम, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट इन मध्य प्रदेश। टू असिस्ट सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अगेन वी आर हैविंग ऑफ कोर्स वन मोर ऑर्डर, वन मोर हायरार्की कॉल्ड एज पर्सन कॉल्ड एज तहसीलदार। टू असिस्ट सपोर्ट देम अंडर तहसीलदार वी आर फाइंडिंग एन ऑफिसर कॉल्ड एज नायब तहसीलदार। टू असिस्ट नायब तहसीलदार ऑफ कोर्स वी आर फाइंडिंग पटवारीज। सो दिस ग्रेडेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्ड एज हायरार्की। जैसे अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में या ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हूं तो मुझे यह पता होना चाहिए कि मेरा ओहदा क्या है, स्टेटस क्या है, मेरे नीचे कितने लोग काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर कितने लोग काम कर रहे हैं। Whether I am of course acquiring the managerial post or the technical post, whether I am acquiring the professional post or the manual post, whether I am acquiring the clerical post or the other post, I have to know very well. So an organization is of course set up in the form of hierarchy. And when we are creating an organization or administration or department or ministry of any government, what we are doing, we are incorporating or giving some authority and responsibility to every level of authority or every level of employees. तो जब हमने हायरार्कियल ऑर्डर बना दिया और हमने ये डिसाइड किया कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में सबसे सुपीरियर सुपरिटेंडिंग ऑफिसर होगा, below district collector we are finding an authority, a person called as SDM, below it we are finding Tahsildar, then we have to provide some authority and responsibility to them actually. Authority means the legitimate use of power. कलेक्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो सेक्शन 144 लगा सके, कलेक्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो लॉकडाउन लगा सके, कलेक्टर के पास ये अथॉरिटी है कि वो ट्रांसफर कर सके जो एम्प्लॉइज लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। तो अथॉरिटी मीन्स लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर। नाउ बी वेरी श्योर, व्हेन आई यूज द टर्म अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी आर गिविंग अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरी ऑफिसर, इट कुड बी अ सबऑर्डिनेट और अ सुपीरियर। बट इफ वी आर प्रोवाइडिंग ओनली अथॉरिटी टू ए पर्सन विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी, if we are providing only authority to an office without accountability and responsibility, then the office could become autocratic. If we are giving only responsibility without authority, the office could become futile or meaningless. तो अगर हम किसी ऑफिस में या ऑफिसर को केवल अथॉरिटी देते हैं, पावर देते हैं, सिंपली समझो पावर देते हैं, तो हो सकता है वो ऑफिस और ऑफिसर क्या हो जाए, ऑटोक्रेटिक हो जाए, तानाशाह हो जाए, अधिनायकवादी हो जाए, डिक्टेटर हो जाए। So it is required for us to provide, of course, what? Some responsibility to the concerned person. It means the responsibility should be co-terminus or co-equal with that of authority. And based on this principle, we have to create an organization or an administration. ठीक है? Organization or an administration. It is nothing but the principle of administration. ठीक है? अच्छा. सेकेंड प्रिंसिपल, मैं कुछ प्रिंसिपल्स पर हम लोग लंबी बात करेंगे प्रिंसिपल पर, ठीक है। देयर इज वन मोर प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन व्हिच हैज बीन इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दैट टाइम, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल ये आपके सिलेबस में भी है। नाउ व्हाट दिस स्पैन ऑफ कंट्रोल इज ऑल अबाउट, अंडरस्टैंड माय कंसेप्ट। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है सिंपल लैंग्वेज में कि मान लीजिए इफ आई एम एन ऑफिसर एंड आई हैव टू कंट्रोल ऑफ कोर्स सम एम्प्लॉइज, so how many employees I can control, supervise, command and superintend effectively? भाई एम्प्लॉइज को कंट्रोल करने की, सुपरवाइज करने की, डायरेक्ट करने की मेरी एक सीमा है, एक लिमिटेशन है।
अगर मेरे अंदर 100 लोग काम कर रहे हैं तो मैं उन्हें शायद कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा ठीक से, लेकिन अगर मेरे अंदर केवल 5 लोग काम कर रहे हैं तो हो सकता है आई कैन कंट्रोल दोस एम्प्लॉइज ऑफ कोर्स व्हाट in a much more effective, prudent manner, in a much more efficient and of course personified manner. So that principle is called span of control. मतलब जैसे मान लीजिए when I take the regard of district collector, तो district collector के अंदर कितने लोग काम करेंगे? जितने लोग काम करेंगे मतलब जितना एरिया होगा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, that area of control is called as what? Span of control. Then we are finding an officer called as SDM. तो SDM के अंदर कितने तहसीलदार काम करेंगे? How many tahsildars are working under the control of superintendents of SDM? If it is 3, it is 4, it is 5, it is 10. Then that area, I mean number of tahsildars which are working under SDM is called as nothing but the span of control of tahsildar. Span means area. कितने लोगों को एक एडमिनिस्ट्रेटर या मैनेजर इफेक्टिवली कंट्रोल कर सकता है? That area is called span of control. अच्छा, ऐसा माना जाता है कि if the span of control is much more limited, then the efficacy and the efficiency would be much more in an administration or in an organization. जितना कम span of control होगा उतनी effectively an administrator or manager, a superior can control his subordinate. ठीक है? So it is nothing but a principle of administration. मतलब जब भी कभी हम एक organization बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग काम क्या करते हैं? ठीक है? We are doing the gradation of offices and officers. हम ये बताते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है. ठीक है, जब हम ये बताते हैं कि आपकी पोजीशन क्या है तो हम लोग बताते हैं कि हु इज सुपीरियर एंड हु इज सबऑर्डिनेट, एंड द सुपीरियर शैल कंट्रोल हाउ मेनी नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट. सो द एरिया बाय विच ऑफ कोर्स द सुपीरियर एबल टू कंट्रोल नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, दैट एरिया इज कॉल्ड अ स्पैन ऑफ कंट्रोल, एंड स्पैन ऑफ कंट्रोल इज नथिंग बट वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ऐसे कई प्रिंसिपल्स हैं. जैसे एक प्रिंसिपल आया बिटवीन 1927 टू 1937, दैट प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज यूनिटी ऑफ कमांड. Now unity of command means what? जैसे मान लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक प्राइवेट कंपनी में मैं एक एम्प्लॉय हूं, ठीक है, और मैं कॉल सेंटर में एम्प्लॉय हूं और मुझे छोटे छोटे काम करना है. मतलब मुझे फोन कॉल्स रिसीव करना है, उनकी क्वेरी को सॉल्व करना है, मुझे सारे काम करना है. ठीक है, जैसे मनोज वाजपेयी कर रहे थे फैमिली मैन पार्ट 2 में, मैं एग्जाम्पल देता हूं. ठीक है, तो मान लीजिए आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम ए वर्कर और आई एम एन ऑफिसर ऑफ कोर्स इन द एडमिनिस्ट्रेशन और प्राइवेट सेटिंग, व्हाट आर द केस में बी. So the issue is I have to take the command. Command मतलब आदेश. I have to take the command or order from a particular officer. But if I am confused that from which particular officer I have to take the command, if I am confused, मुझे ये नहीं पता है कि from which particular officer or superior I have to take the command, then of course much more formalism, duplication of work, much more confusion would be seen in my work profile. मुझे समझ में नहीं आएगा कि बेसिकली मुझे काम कैसे करना है. तो वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वुड बी देयर शुड बी यूनिटी ऑफ कमांड. आई मीन a subordinate should know very well that from which particular officer or superior he or she has to take the command, and one person should give command only to one person. हालांकि बहुत पुरानी बात हो रही है, मतलब ये जब प्रिंसिपल्स इवॉल्व हुए थे तो इवॉल्व हो रहे थे 1927 से लेकर 1937 तक. तो आजकल तो बिकॉज ऑफ ऑटोमेशन, बिकॉज ऑफ टेक्निक्स, अ पर्सन कैन कंट्रोल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एंड एन एम्प्लॉय कैन टेक ऑफ कोर्स कमांड, आदेश फ्रॉम नंबर ऑफ सुपीरियर्स. तो अब तो सिचुएशन चेंज हो गई. हम लोग बात कर रहे हैं फ्रॉम 1927 टू 1937. यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट ऑल द न्यू ऑर्गेनाइजेशंस, factories, companies were established throughout the world in later part of 19th century and early part of 20th century. I mean, so many complex organizations have evolved. जब यूरोप में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ अमेरिका के साथ साथ, तो कई नई कंपनी, कई नई फैक्ट्रीज बनी. इन नई कंपनीज, कई फैक्ट्रीज ने कई एम्प्लॉयर्स को, कई वर्कर्स को हायर किया, उन्हें रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया. बट when the workers become the part of the company, become the part of the industrial setting, be very sure, ठीक है, then so many complicated problems have arrived in the same organizational setting. बहुत सारी समस्याएं आ गई. समस्या यह है कि भाई आपको प्रोडक्शन तो करना है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, आपने बहुत सारे एम्प्लॉयज को रिक्रूट कर लिया, उनको रोजगार दे दिया, एम्प्लॉयमेंट दे दिया, लेकिन ऑन द बेस ऑफ विच प्रिंसिपल दे हैव टू वर्क. There should be some universal principles which could be applied in every setting. Universal principles like hierarchy.
It is required for every organizational setting, it could be public administration or private organization, to arrange their employees in hierarchical manner. It is required for every setting, every industry, every manufacturing unit, every factory, every company to adopt principles like span of control and unity of command. So why all these new principles have evolved in private and public administration? Because, listen carefully, because some new organizations have evolved after industrialization. प्राइवेट सेक्टर का फ्लरिशमेंट हुआ, एक्सपेंशन हुआ, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनने लगी, खूब सारे वर्कर्स कंपनियों में, फैक्ट्रियों में काम करने लगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी चेंज होने लगा क्योंकि कई कॉलोनियल जो नेशन थे, ठीक है, वो आजाद होने लगे. द कंसेप्ट ऑफ नेशन स्टेट हैज इवॉल्व्ड, and then the public administration becomes much more complex with private administration. So what actually happened from 1927 to 1937? So many scholars have evolved, propounded, proposed some principles of administration. And according to them, these principles could be applied in every organization, in every administration. अगर इन principles को हम हर एक administration में apply कर देते हैं, then we can secure efficiency in economy, we can secure productivity and production. Because these principles are having universal validity. These principles are having universal application. These principles are having the status of a science. ये एक science की तरह है, which have supporting scientific evidences. तो ये जो प्रिंसिपल जो मैं बता रहा हूं, हालांकि बहुत सारे प्रिंसिपल हम लोग आगे बात करेंगे, पर मैंने दो तीन प्रिंसिपल आपको बताए, हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल. These principles should be applied, should be implemented in every organization. Because all these principles are having universal validity. और इन प्रिंसिपल्स को अगर एक ऑर्गेनाइजेशन, अगर एक एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइवेट हो पब्लिक हो, अडॉप्ट कर लेता है, इंप्लीमेंट कर देता है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंट हो सकता है, इकोनॉमिकल हो सकता है, प्रोडक्टिव हो सकता है, कॉम्पिटेंट हो सकता है. बिकॉज दीज प्रिंसिपल्स आर हैविंग द वैलिडिटी, द सैंक्टिटी ऑफ साइंस. I agree. So as I told you before, number of scholars have advocated these principles to be applied in every type of administration, public and private. ठीक है. Public means governmental administration, private आपको पता है private administration. ठीक है. Like there was a scholar called Henry Fayol, and Henry Fayol, I will dictate, has written a book called as Industrial and General Management, where he advocated all these principles to be applied, of course, in every administration. Number of other scholars, like of course there is a scholar called as MP Foley, Mary Parker Foley. He has written a book called as Creative Experiences in 1924, where again he has advocated all these principles to be applied in every type of organization. Then we have of course one more scholar called as Mooney and Riley, and he has written a book called as Onward Industry. He has written a book known as what? The Onward Industry. ठीक है. ये स्लाइड आज आपको मिल जाएगी, आप देखोगे. मैरी पार्कर फॉले हैज रिटन अ बुक कॉल्ड एज क्रिएटिव एक्सपीरियंसेस. हेनरी फेयोल, एक स्कॉलर था, उसका नाम था फेयोल. ही रोट अ बुक कॉल्ड एज इंडस्ट्रियल एंड जनरल मैनेजमेंट, एग्री, इन 1960. ठीक है. देन देयर वाज वन मोर स्कॉलर, एक्चुअली टू मोर स्कॉलर, वन इज गुलिक एंड अदर वन इज उर्विक. They have submitted or published a paper called as Paper on the Science of Administration. So number of scholars were there. And all these scholars, I mean Gulick, Urwick, Mooney, Riley, MP Foley, Henry Fayol, number of them are there. They all have advocated the universal application of these principles, because principles are having scientific validity. They are considered as science. Why they are considered as science? Because they have been developed after so much of research and expeditions. तो इन प्रिंसिपल को अगर कई ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट करते हैं, इंप्लीमेंट करते हैं, तो उनमें एफिशिएंसी, इकोनॉमी बढ़ सकती है. एंड देन दिस स्टेज इज कॉल्ड एज व्हाट? द स्टेज ऑफ प्रिंसिपल्स. आई होप द सेकंड स्टेज इज आल्सो वेरी मच क्लियर इन योर माइंड. और आपके दिमाग में ये क्लियर हुआ होगा कि हमें लिखना क्या है. ठीक है, तो चलिए फटाफट लिखते हैं. लेट्स कम टू द सेकंड स्टेज. वी हैव टू कवर ऑल द 5 स्टेजेस. आई एम कमिंग टू द सेकंड स्टेज नाउ. स्टार्ट राइटिंग. Second stage. Second stage title is Principles of Administration. Principles of Administration.
Principles of administration. Agree? Continue. Continue. During this stage, scholars like Henry Fayol, scholars like Henry Fayol, scholars like Henry Fayol, scholars like Henry Fayol, F-A-Y-O-L, Henry Fayol, Mary Parker Follett, or you can just write M.P. Follett, और फॉले बोलते हैं इसको, F-O-L-L-E-T, Mary Parker Follett, Mary Parker Follett, Mooney and Riley, just see the name, मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूं यहाँ पे, Mooney and Riley, और Rayleigh, Mooney, Rayleigh, Gulick and Urwick, Mooney and Rayleigh, Gulick and Urwick, Gulick and Urwick, etc., propounded that certain universal principles of administration, propounded that certain universal principles of administration could be developed and applied in every context. Context means public or private administration. Could be developed and applied in every context. Every context, in bracket, public and private administration. In every context, to increase the efficiency, and economy, of administration. See, the main purpose is to increase the efficiency and economy. To increase the efficiency and economy of administration. Principles like hierarchy, span of control, unity of command, मैं सब पर आगे बात करूंगा लंबी, unity of command, delegation, span of control, unity of command, delegation, delegation means transfer of authority, delegation, centralization, decentralization, etc., have universal validity and relevancy. To be applied, to be applied in both public and private administration. To be applied in both public and private administration. ठीक है? Continue. All these scholars have claimed that
all these scholars have claimed that administration is a science. Administration is a science because all these principles, administration is a science. अगर एडमिनिस्ट्रेशन इन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करता है तो साइंस बन जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन इज अ साइंस बिकॉज ऑल दीज प्रिंसिपल्स could bring efficiency, productivity. All these principles could bring efficiency, productivity, and effectiveness. Efficiency, productivity, and effectiveness. Efficiency, productivity, and effectiveness in administrative activities. Effectiveness in administrative activities. ठीक है. तो देखो मैं करना क्या चाहता हूं आप लोगों के साथ. On one hand, you are having all the supporting notes. I mean a proper text, what we have provided to you. Then you are having, of course, the notes of 3 markers and 5 markers. I'm also going to provide some slides to you, of course, in the description section today. And then I'm dictating some part also. Now, by the combination of all these important material, we can frame a proper answer. But the most important part would be the dictation part. I hope it's clear. I agree. तो मैं आपको फिर बता दूं कि if you are reading the material what we are providing, if you are considering the 3 markers and 5 markers what we have delivered, if you are taking the reference of the slides what I'm going to of course demarcate, and if you are writing the language what I am dictating, then there would be a high possibility that you can secure a very high marks in the mains examination. Of course of MPPSC. ठीक है? So this is our second stage, and now we are coming to the third important stage of evolution. It's a very broader topic, तो आपको हमें थोड़ा सा और पढ़ना पड़ेगा इसको. तो आते हैं थर्ड स्टेज पर. देखिए, now talking about the third stage, what the third stage is all about. The title of this particular stage is of course what? Era of challenge. And the development of this particular stage has taken place. I mean the period of that particular stage was between 1938 to 1947. It is our third stage of evolution, the phase of development of public administration as a discipline. अब इस स्टेज में क्या हुआ जरा देख लेते हैं. देखिए, सुनो. अच्छा, in the very first stage, we have accepted this principle, this notion that politics, I hope you know very well what is politics now. Politics is different from administration. Agree? So we have accepted that we have to study administration as a separate subject. And politics is of course separated from administrative activities or administrative consideration. Agree? Achha, so this notion had been accepted, one thing. Now in the second stage, we have proposed, I mean so many scholars like Henry Fayol, Golik, Urvik and so on and so forth, they have proposed some new principles of administration which could be applied of course in every type of administration, private and of course public. And if the administration or the organization accept these type of principles, then the administration could bring more efficiency, economy and productivity in their working. तो ये प्रिंसिपल्स को अगर एडमिनिस्ट्रेशन अप्लाई करते, एग्जीक्यूट करते, तो उससे एफिशिएंसी भी बढ़ सकती है, इकोनॉमी बढ़ सकती है, प्रोडक्टिव भी बढ़ सकती है, प्रोडक्ट भी बढ़ सकता है, आउटपुट भी बढ़ सकता है एक यूनिट का, चाहे वो यूनिट इंडस्ट्रियल हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी ही क्यों ना हो. तो ये दो बात हमें देखने को मिली, ये दो इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए अप टू 1938 वी कैन से. बट नाउ बी वेरी श्योर फ्रॉम 1938 टू 1947 both these perceptions about administration had been challenged. I mean both the observation with regard to politics administrative dichotomy and principles of administration had been challenged, and had been challenged actually by so many scholars. Those scholars are called as human relations scholars or behavioral scholars. तो कुछ स्कॉलर्स ने, एकेडमिशियंस ने, ठीक है, ह्यूमन रिलेशन के बारे में लिखना शुरू किया.
एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक प्राइवेट एंटरप्राइज के अंदर, एक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ह्यूमन रिलेशन या ह्यूमन बिहेवियर क्या हो सकता है. एंड नंबर ऑफ स्कॉलर्स हैव रिटन अबाउट ह्यूमन बिहेवियर. Scholars like, there was a scholar called as Elton Mayo. I will discuss his contribution. Elton Mayo. Then we are having a scholar called as Herbert Simon, Chester Barnard. A number of scholars were there. So what these scholars have done, these scholars have challenged the universal validity of all these principles. And they have also raised the argument that it is not possible to differentiate, to segregate or to separate politics from administration. देखो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा पहली बात कि ये जो प्रिंसिपल्स आप बता रहे हो, प्रिंसिपल्स लाइक हायरार्की, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पैन ऑफ कंट्रोल, सेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन, हम सब प्रिंसिपल्स पर आगे बात करेंगे. तो ये जो प्रिंसिपल्स की आप बात कर रहे हैं, ये सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, दे डज नॉट हैव द सेम टाइप ऑफ यूनिवर्सल वैलिडिटी. नाउ टेक एन एग्जांपल, इफ आई एम टेकिंग द रिगार्ड ऑफ एन इंडस्ट्री विच एस्टैब्लिश इन यूएसए. तो अगर यूएसए में एक इंडस्ट्री है, एक मान लो एक प्रोडक्शन यूनिट है जो पेन बनाती है. The same type of industry had been established, of course, in India. So we are having two different enterprises of two different systems, of two different societies. So the workers which are working in American industry and the workers which are performing their function, of course, in Indian setup, they are having different belief, different aspiration, different demands, different working style, different mode of thinking, different social fabric. तो अगर अमेरिका में एक इंडस्ट्री है और उसमें कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं, तो उनके सोचने का तरीका अलग होगा, उनके काम करने के मेथड्स अलग होंगे, उनकी डिमांड, उनकी एस्पिरेशन, उनकी थॉट प्रोसेस अलग होगी. जो इंडिया में वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटीज अलग होती है. उनकी प्रायोरिटीज ये है कि थोड़ा बहुत पैसा मिल जाए, हमारा काम, घर का काम चल जाए. उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि हमारे वर्किंग आवर कितने हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि हमारे वर्किंग एनवायरमेंट कैसी है, हमें बेटर इक्विपमेंट मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं. उनका मेन फोकस ये होता है कि हमें काम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ठीक है. तो ये स्कॉलर्स ने कहा कि व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ दीज प्रिंसिपल्स, जो आप प्रिंसिपल्स आप बता रहे हो, नंबर ऑफ प्रिंसिपल्स आर देयर, इट इज नॉट पॉसिबल दैट ऑल दीज प्रिंसिपल्स कुड ब्रिंग एफिशिएंसी इन इकोनॉमी इन एवरी कंट्री. It is not possible that the efficacy of these principles could be acknowledged in different type of societies. It is not possible that these principles could bring more production and productivity in both public and private administration. अगर एडमिनिस्ट्रेशन जापान का है, रशिया का है, इंडिया का है, स्कैंडिनेविया का है, अमेरिका का है, तो ये पांचों देशों के या पांचों एरियाज के एडमिनिस्ट्रेशन होंगे, वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉइज होंगे, पब्लिक सर्वेंट्स होंगे, इनके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग होगा. अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं आपको, व्हेन आई टेक द रिगार्ड ऑफ यूरोप, यूरोप में ह्यूमन राइट्स वैल्यूज काफी पर्सोनिफाइड हैं, काफी यू कैन से बेसिकली स्टैब्लिश्ड है. मतलब वहां पर अगर मान लीजिए सड़क पर अगर कोई रेडी लगा रहा है और द रेडी इज ऑफ कोर्स इलीगल, अगर कोई ठेला लगा दिया मान लीजिए, एंड द ठेला, दैट पर्टिकुलर ठेला or pavement dwellers, what we are talking about, or any type of establishment is completely illegal. We know very well. You cannot create, of course, any type of establishment. आप ठेला वेला रेडी वगैरह आप नहीं लगा सकते हो रोड पर. हमारे यहाँ भी इलीगल हो सकती है, लेकिन वहां पे द एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट हैव द पावर, ऑफ कोर्स, टू स्क्रोल और टू पनिश और टू गिव एनी टाइप ऑफ डायरेक्शन टू these pavement dwellers, रेडी वाले. उसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है कि एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा एक डिपार्टमेंट के पास, डिपार्टमेंट एक नोटिफिकेशन इशू करेगा, तब जाके वो रेडी वाला हटेगा. लेकिन हमारे यहां द वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन समवॉट डिफरेंट. हमारे यहां कंप्लेंट हुई कि इलीगल शॉप्स हैड बीन कंस्ट्रक्टेड, ठेले वेले एक जगह सरकारी जमीन पर लगे हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहला काम क्या करता है, उनको हटाता है. हटाएगा नहीं तो फिर लाठी चलाना चालू कर देगा. अगर हटेंगे नहीं तो फिर प्यूनिटिव एक्शन लिए जाएंगे, लाठी चला रहे हैं, गालियां दे रहे हैं. तो ये बिल्कुल हो सकता है. तो मेरे कहने का मतलब ये था, और एक्चुअली इन स्कॉलर्स का मतलब ये था कि इन डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, द मोड ऑफ थिंकिंग ऑफ एम्प्लॉइज कुड डिफर, एंड द प्रिंसिपल्स व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट वुड नॉट अप्लाई, आर नॉट एज एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिव इन डिफरेंट टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग. I mean, for different type of organization which are prevailing in different societies, in different countries, we have to develop some new principles. So these principles, what you have propounded, are called as fallacies. Fallacies means illogical argument, are known as proverb. Proverb means kahavat.
दे आर नॉट हैविंग यूनिवर्सल वैलिडिटी। अमेरिका के प्रिंसिपल इंडिया में अप्लाई नहीं होंगे, इंडिया के प्रिंसिपल कोरिया में अप्लाई नहीं होंगे। तो हाउ दीज प्रिंसिपल्स कैन बिकम यूनिवर्सल? इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। लाइक आई वांट टू गिव a simple example. In communist type of regime or dictatorial type of system, it could be the possibility that a superior or a leader can control thousands of employees, because employees are influenced by the charisma, by the charismatic character of that particular leader. कभी कभी यह होता है कि भीड़, लाखों की भीड़ एक लीडर के, एक पर्सन ऑफ अथॉरिटी की बात मानती है, उसने जो बोल दिया वही सही है, भले वो गलत हो। और कभी कभी यह होता है कि कभी लीडर की बात उसके खुद के 4-5 एम्प्लॉइज भी नहीं मान रहे। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा जो लीडर है उसके पास, जिसके पास अथॉरिटी है, उसकी बात, उसके ऑर्डर्स को हर आदमी एक्सेप्ट करे, कभी कभी एक्सेप्ट नहीं भी करते। सो वी कैन नॉट से दैट प्रिंसिपल्स हैव यूनिवर्सल वैलिडिटी। ठीक है। एंड सेकेंड थिंग, वी कैन नॉट सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन। आई मीन व्हेन वी आर स्टडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, ऑलवेज इट इज रिक्वायर्ड फॉर अस टू स्टडी पॉलिटिक्स. We have to study that how the policies are framed, how the law is framed, because in policy making and law formulation, administration is also involved. जैसे हमारे देश में जब पार्लियामेंट बिल पास करती है तो बिल एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेशन बनाता है, सेक्रेटरीज बनाते हैं, तो एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर इन्वॉल्व है। एडमिनिस्ट्रेशन बिल को बना भी रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन बिल को यानी लॉ को एग्जीक्यूट भी कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी बना भी रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी एग्जीक्यूट भी कर रहा है। तो अगर आप सोचते हो कि एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट लिंक्ड विद पॉलिसी, इट्स नॉट द फैक्ट। Yes, I want to give one simple example. When the new government is taking the charge, like in the recent past when the Modi government in 2014 had taken the charge, or 2019 had taken the charge, or in the recent past when Shivraj Singh government became the chief minister, what Modi and Shivraj Singh Chauhan has done, they have deployed their own favored persons, own favored administrators on important post. उन्होंने अपने फेवर जो एडमिनिस्ट्रेटर थे उनको सेक्रेटरीज बनाया, चीफ सेक्रेटरी बनाया, अंडर सेक्रेटरी बनाया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बनाया, आईएएस बनाया, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनाया, एक्सेट्रा। एग्री? तो वी कैन नॉट सेपरेट पॉलिटिक्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेशन, एंड बोथ दीज observations or concepts of the very first and the second stage were challenged by numbers of scholars, of course, in the third stage, and that stage is called as the era of challenge. In that particular stage, one very interesting observation has been given by Mr. Elton Mayo. मैं इस पर आगे बात करूंगा. And Elton Mayo proposed a theory called as human relation theory. इनका ये मानना था कि efficiency and economy and productivity in an organization could be achieved or could be increased by understanding the human behavior in the organization. जैसे मान लीजिए कि अगर मैं एक ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हूं, एक कंपनी का पार्ट हूं, और कंपनी में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं, और मेरे साथ एक टीम है, और टीम में कुल मिला के 10 लोग हैं, और मुझे एक प्रोजेक्ट दे दिया गया प्राइवेट एंटरप्राइज में, मुझे प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, तो मेरा टीम वर्क कैसा है, टीम मेंबर से मेरे रिलेशन कैसे है, क्या मैं एलिनिएट फॉर्म में उनके साथ काम कर रहा हूं या कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में काम कर रहा हूं, वेदर आई एम इन अ पोजिशन ऑफ कोर्स टू डेवलप सम कंड्यूसिव एनवायरमेंट ऑफ कोर्स इन माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, whether I am having, of course, optimum human relations with my employees or not. If I am a superior, then whether I am hearing all the observations, all the grievances of my employees or not. So according to Mr. Elton Mayo, it is required for us to study administrative behavior or human behavior. It is required to give due weightage to human relations. And when we are giving due weightage to human relation in an organization, then we can secure much more productivity and of course what? Much more effectiveness in an organization. तो केवल प्रिंसिपल लागू करने से एफिशिएंसी, इकोनॉमी, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा ऐसा नहीं, हमें दूसरे पक्षों पर, दूसरे एस्पेक्ट पर भी ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कई लोगों से आपने सुना होगा ना, कई लोगों को बोलते हुए सुना होगा कि जितनी मेरी धन दौलत वगैरह पैसा है, कैपिटल है, ICOR है, सब ले लो, लेकिन मुझे अपनी टीम वापस कर दो। अगर मेरे पास अपनी टीम है, then of course I can secure the same type of effectiveness and net worth capital in the coming future. In spite of the fact that I am not having the resources now, but I can develop the resources because I am having the team. Why I am having the team? Because I am having that type of relations with my team members. मैनेजमेंट में जब भी कभी बच्चों को पढ़ाया जाता है
तो टीम वर्क कैसे होता है, टीम कोएगुलेशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, लीडरशिप स्किल्स क्या होनी चाहिए, ये सब पढ़ाया जाता है। ठीक है, और इस पर भी हमें ध्यान देना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन सिक्योर ऑफ कोर्स व्हाट, इफेक्टिवनेस एंड इकोनॉमी। So my contention over here is that in this particular stage, I mean the third stage, both the basic domains of both the basic observation given in the very first and the second stage were challenged by some scholars. And there are two, three important scholars which have challenged the established principles of administration. The very first scholar was Elton Mayo. Other one was Herbert Simon. Third one was, of course, which one? Chester Bernard. A number of scholars were there. And that's why this era is called as era of challenge, challenging the politics administration dichotomy and challenging the universal application of principles. I hope you understand the concept. It is our third stage. ठीक है, चलो तो इसके बारे में कुछ लिखोगे, फिर हम आते हैं फोर्थ स्टेज पर। मुझे उम्मीद है समझ गए, लिखेगा फटाफट, फिर आगे बढ़ेंगे। The title is Era of Challenge. Era of Challenge in bracket from 1938 to 47. Era of Challenge from 1938 to 47. From 1938 to 47. Continue. During this stage, the well-established pillars of public administration, public administration were challenged. Public administration were challenged by the argument that administration cannot be separated from politics because it has political role and dimension. Administration is directly and positively involved. Continue. Administration is directly and positively involved. In the process of policy formulation. Its implementation, policy formulation, its implementation, its monitoring, and evaluation. ठीक है, and evaluation. Continue. In this stage, the principles of administration, were also challenged. Based on its, based on the ground of its universal validity
based on the ground of its universal validity and effectiveness in different administrative system. These principles were regarded as proverb, muhavre, kahawate. These principles were regarded as proverb and naturalistic fallacies. FALLACIES. Fallacies का मतलब होता है unsound argument, bad argument, wrong argument. Naturalistic fallacies, or we can say unsound argument or bad argument, irrelevant. Naturalistic fallacies or irrelevant. Agree? Change the paragraph. During this stage, human relation behavioral approach was advocated by scholars like Elton Mayo, M-A-Y-O, or you can simply write Mayo, M-A-Y-O, Mayo, Herbert Simon, or only you can write Simon, Mayo, Simon, Chester Bernard, Chester Bernard, etc. According to them, human factors like their aspirations, comma, source of their motivation. Human factors like aspirations मतलब आकांक्षा, क्या चाहते हैं लोग. Source of their motivation, वो किससे motivate होते हैं. Source of their motivation. Relation within the organization. Behavior of superior and subordinate. ऐसा करो, behavior of superior towards subordinates. Behavior of superior towards subordinates. Leadership skills, decision making capacity. Can bring or could bring. Decision making capacity can bring more efficiency and effectiveness rather than application of principles. So I hope so you are in a position to understand the third important stage of evolution of public administration. और अब आपको ये समझ में आया होगा कि how we have to study this particular topic of public administration. Agree? ठीक है? The last two stages, which are somewhat comprehensive, are remaining, and tomorrow we will pursue with the same stages, I mean the last two stages. Tomorrow we are going to wind up this particular topic of evolution of public administration. पर मुझे उम्मीद है आप समझ रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे लिखना है. ठीक है? And of course tomorrow I will start a new topic called as theories of public administration. I mean, so many theories has been proposed in all these stages, and we have to take the regard of all these theories. The main objective of all these theories again is to bring efficiency and economy, production and productivity
in our system, in our administration. Administration could be public, governmental, or private. Private means entrepreneur. Agree? So I hope you understand the lecture, and this is all for today. Tomorrow we will pursue with the same topic. Tomorrow we will cover the remaining 2 stages, and tomorrow we will start our our next important topic of discussion and deliberation in the concerned unit of administrative management called as public administration. ठीक है? Now, if you have any question, you can ask. If you have any question, you can ask. Waiting. Shilpa, span of control and hierarchy, they are 2 different principles, but they both are linked with each other. We cannot separate span of control with that of hierarchy. So you can say one is a replica of other principle, one is the counterpart of other principle, although they are 2 separate principles. Thank you, Abhishek. I hope the lectures would be beneficial for you. Thank you. चलिए, so thank you very much बच्चों, take care. कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम पे, and tomorrow we are going to pursue with the same topic. Take care, do well and be safe, and also be healthy. Thank you very much. Take care.